continuing our chapter number 14, that is natural resources. We have started with the biogeochemical cycle. We have completed water cycle, nitrogen cycle and carbon cycle. Now only one cycle is left, that is oxygen cycle. ये 3 साइकिल हमने कंप्लीट किया है. अब हम ऑक्सीजन साइकिल के बारे में देखेंगे कि ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, कैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और किस तरीके से ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में दिया जाता है. दिस मेक्स अ होल कंप्लीट ऑक्सीजन साइकिल. नाउ सी, ऑक्सीजन इज अबंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ. ये 21% हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. इट ऑल्सो अकर्स इन अ एलिमेंटल फॉर्म लाइक सिंपल ऑक्सीजन, और नहीं तो ये कभी कंबाइंड फॉर्म में भी रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन होता है, या कार्बोनेट्स ग्रुप जो होते हैं या सल्फेट ग्रुप्स जो होते हैं, इन सभी में कंबाइंड स्टेट्स में ऑक्सीजन पाया जाता है. Oxygen is also a very important component of most biological molecules like carbohydrate, fats, proteins, nucleic acid. ये सब में एक ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्सीजन इसमें होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी कंपोनेंट्स में. Now let's talk about the oxygen cycle. Oxygen cycle is very important to maintain the level of oxygen in atmosphere. Oxygen from atmosphere is used up in process. ये कुछ प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से यूज्ड होता है. लाइक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड. Even during the decomposition also oxygen is used. Rusting, anything, rusting of an iron or rusting of any element, oxygen is combined. And combustion, for combustion also oxygen is required. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो combustion नहीं हो पाएगा. कोई भी फॉसिल फ्यूल्स हो या कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, उसको अगर जलना है तो उसके लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है. सो दिस आर द ऑल द methods or a process by which oxygen is consumed from the atmosphere. Let's see how oxygen is generated or returned back to the atmosphere. First is plant, that is photosynthesis. We know that during photosynthesis plant absorb carbon dioxide and release oxygen. This is the most important process by which ऑक्सीजन इज़ जनरेटेड इन द एटमॉस्फेयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. प्लांट कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सनलाइट वाया रिएक्शन विथ वाटर वेपर. सनलाइट, इवन जो सनलाइट होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है. व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर वेपर दे जनरेट ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. So this forms an oxygen cycle in nature. Oxygen is very important element for all living component. ऑक्सीजन के बगैर किसी का भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है. But some bacterias are there. For them oxygen can be poisonous elemental gas. कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको अगर ऑक्सीजन मिल गया then they will die. So on the one part oxygen is very important for living organism, but not all living organism. There are some bacteria, they can be poisoned by elemental oxygen. Even the nitrogen fixing bacteria, as we have seen in the nitrogen cycle, does not take place in the presence of oxygen. दो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होते हैं वो भी ऑक्सीजन नहीं यूज़ कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय द बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So this is the whole oxygen cycle, how oxygen is consumed from the atmosphere by various respiration, rusting, combustion, decomposition process, and how oxygen is generated in the atmosphere by the process of photosynthesis by green plant and also with the help of sunlight. So this is the oxygen cycle. The next and the last topic of the lesson is ozone layer.
Ozone layer act as a protective shield which protect Earth from harmful UV rays of sun. ये एक शील्ड की तरह काम करता है जो पूरे अर्थ को सन के हार्मफुल यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है. बट व्हाट इज ओजोन? हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड? ओजोन इज फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का 3 एटम कंबाइन होता है तो वो O3 बनता है एंड द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3. ऑक्सीजन के जब 2 एटम कंबाइन होते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस बनता है एंड दिस ऑक्सीजन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. बट जब 3 एटम कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के, इट फॉर्म्स ओजोन एंड दिस ओजोन इज पॉइजनस गैस. ये ओजोन पॉइजनस होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल नहीं कर सकता. सो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन is life for living being, but 3 atom of oxygen combines to form ozone and this ozone become poisonous. But luckily it is not stable near the earth's surface. Stable means ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से एक डिस्टेंस पे होता है और यहाँ पे जब वो रहता है इट परफॉर्म अ वेरी एसेंशियल फंक्शन टू एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन. ये अर्थ के ऐसे लेयर पे है जहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे ये ओजोन लेयर पाया जाता है एंड हियर इट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम सन. So this prevent this harmful radiation from reaching the earth's surface and damaging many forms of life. But what happened recently, this ozone layer started depleting. Depleting का मतलब होता है कि अब ओजोन लेयर धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है, इसमें होल्स क्रिएट हो रहे, ऑल बिकॉज ऑफ दी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CFC, HFC, VOC. दिस आर ऑल ग्रीन हाउस गैसेस. जब ये एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है देन व्हाट हैपन, सी हियर, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, when CFC is released into the atmosphere by the industries or by the home equipment, they rises up to the troposphere. Here they combine with the sunlight break this CFC to release chlorine. This chlorine is a very stable gas. ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है. दिस इज अ चेन रिएक्शन, ये कंटिन्यूस रिएक्शन होता रहता है एंड इट कॉजेज मोर एंड मोर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. सो द ओनली थिंग वी कैन डू टू प्रोटेक्ट दिस ओजोन लेयर इज टू stop further damaging by reducing all this greenhouse gases. जितना हम इन gases को कम use करेंगे, for example refrigerator, air conditioner, these are all the home equipment that release large amount of CFC gases like fire extinguisher, many gases from the industries. So they should be controlled so that ozone layer can take a time to heal itself. अगर ये होल्स बड़े होते गए, अगर ओजोन डिप्लीशन ज़्यादा होता गया, then it will cause all the UV rays to directly reach earth surfaces which can cause many problems like skin cancer, skin allergy or irritation, then damage to marine life, reduction in the plant growth, and many skin mutilation can occur if this harmful UV rays reaches earth atmosphere. So we should all think about how we can protect our ozone layer from further depletion. So this is the end of the chapter. Read the lesson carefully